ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, और इस बारे कुछ टिप्स लेने हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट पारुल बख्शी तो। पारुल, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। सो जब हम बात करते हैं अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर फोकस करके आज बात करना चाहेंगे। आप एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सारे बिजनेसेस के साथ डील करती हैं जी। तो क्या चल क्या रहा है मार्केट में? वेयर डू वी स्टैंड इन कंपैरिजन टू द मेन स्ट्रीम? Well, I think that you can't really compare because businesses are businesses. Right. Either they're small, medium sized, or large. Ji. Right. So I don't think it's a question of mainstream or South Asian. A lot of South Asian people are doing really well in their businesses. Right. But their names are nowhere to be. You know, you don't know too much about them. What's happening so far is a lot of people are budding entrepreneurs. Our community is very big on business. Right. They want to be entrepreneurs. They have that spirit. जी. But some of them are either new immigrants from a different, you know, they've come from India or things like that. They're trying to settle in, and somebody comes up with a business idea, which they're like, oh yeah, maybe I should put my money in. Right. And then they invest a bit of money, but they don't realize that they maybe should have done a little bit of research before buying a franchise or some sort of a business that they have no expertise in. जी. Right. So lack of research एक major कारण है आपका कहना है? जी, and a lack of funds too. Okay. Sometimes you know, they've spent all of that into the business. They don't realize that there's a lot of aspects that may go into it. If you buy a restaurant, maybe it needs renovations, maybe it needs a new look. So there's that extra bit of money that they haven't allocated for. Another thing is marketing and advertising. जी. Should be at least 20 to 30% of when you're starting a business. जी. Because if no one knows you exist, then you don't exist, right? क्वालिटी के बारे में आप क्या महसूस करते हैं कि क्या एक कस्टमर जो है जब एक चीज़ सपोज $8 की मिल रही है और क्यों कोई उसके $15 खर्चेगा खाने पीने की जब हम बात करते हैं, बट क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, क्या आर वी क्वालिटी कॉन्शियस? I think we're brand conscious. We're not quality conscious, जी. but we are brand conscious as a community. I mean, you might see that we like spending on luxury cars, big homes, जी. because that's a part of our society, Right. and it's something that we like. We like to spend money on. Right. So instead of enjoying the moments of our lives, we work hard in order to buy the next big thing. Right. Then you don't realize that you spend so much of your time accumulating ye sare material goods, right? Right. Which at the end of the day don't have much value. So basically अब with your experience आप क्या देख रहे हैं, कैसे इन challenges से बाहर निकला जाए और कैसे अपने आप का एक reputation और एक benchmark जो है इंडस्ट्री में establish किया जा सके, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री है, उसमें अंडरकटिंग और प्राइस वॉर्स जो हैं उसके कारण अल्टीमेटली नुकसान तो बिजनेसमैन का ही हो रहा है, सबका हो रहा है। एब्सोल्युटली। सो यू माइट थिंक कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, एक व्यक्ति जो ये शुरू करता है वो समझता होगा कि मुझे बेनिफिट मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका रिपल इफेक्ट जो है उसको फेस करना ही पड़ेगा। सो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशंस? आई थिंक दैट पीपल जैसे कि सबको थोड़ा सा केयरफुली कोई बिजनेस या किसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, नॉट टू पुट all their eggs in one basket, right? है ना? तो जैसे कि at least if you're looking to be a business person, don't just quit your job or your 9 to 5, right? Do something, and if it seems to be working out and people are taking a good image of it or a good liking of it, then continue. Otherwise, I think that if an industry doesn't make money, right, just leave it. और जो ये प्राइस वॉर्स चल रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Price wars, it exists. It's a part of business. Competition will always exist, है ना? If there's a demand for something, there's be a lot more suppliers for the same thing. So it's just a demand and supply thing. It's nothing more than that. Right. So it will exist as long as you are in business. Right. The only thing you can do is be strong and keep a standard straight. Right. So that way you're being compensated for what you are providing, and if you do a good service, आपके पास दोबारा आएंगे लोग, right? Thank you very much for your time.